हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एडिटिंग वीडियो। तो हाल में તમે જે ડેમો વિડિયો જોયો આજે આપણે સ્ટેટસ બનાવવાના છીએ, તો વિડિયોને સ્કીપ કર્યા વગર એન્ડ સુધી જોજો અને ચેનલ પર નવા હોય તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને ઓલ પર સેટ કરી નાખજો। તો સૌ પહેલા તમારે લાઇટ મોશન એપમાં આવી જવાનું છે અને લાઇટ મોશન એપની લિંક તમને મારા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે, ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી દેજો। તો ચલો હવે આપણે એનું એડિટિંગ શરૂ કરીએ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एडिटिंग वीडियो। तो હવે થોડા દિવસોની અંદર મહાકાળી માતાનો બર્થડે આવે છે, તો સિમ્પલ જે આપણે બર્થડે માટેનું જોરદાર સ્ટેટસ વિડીયો એડિટ કરવાના છીએ। તો સૌપ્રથમ તમારે લાઇટ મોશન એપની અંદર આવી જવાનું છે ને એમાં તમારે એક XML ફાઇલ એડ કરવાની છે, મહાકાળીમાં બર્થડે XML, અને XMLની લિંક તમને મારા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। સૌપ્રથમ આપણે XML ફાઇલની અંદર આવી જવાનું છે। XML में आवे छे તમે જોઈ શકો છો, જેમાં આપણી બધી ટેક્સ્ટ ઇફેક્ટ ઇમોજી બની બધું મટીરિયલ એડ કરેલું છે, ખાલી એમાં ફોટા અને સોંગ એડ કરવાનું છે। તો સૌ પહેલાં તમે આ રીતે ફર્સ્ટમાં આવી જવાનું છે ને પ્લસ લાઇકમાં જઈ ઓડિયોવાળા ઓપ્શનમાં જઈ અહીંયાથી આપણે એક સોંગ એડ કરવાનું છે એની અંદર સિમ્પલી આ રીતે, અને સોંગને કહીને આ રીતે બધા નીચે લઈ દેવાનું છે। બસ આ રીતે આટલો કરાવે સિમ્પલી એમાં થોડું આગળ આવવાનું છે ને તમને ઇમોજી અને ટેક્સ્ટ જોવા મળશે। તો સિમ્પલ તમારે એની અંદર કંઈ પણ એડિટ કરવું હોય તો સિમ્પલ તમારા ગ્રુપની અંદર આવી જવાનું છે, અહીંયાથી એડિટ ગ્રુપ आ रीते। तो आ रीते तमने बधी टेक्स्ट इफेक्ट अने इमोजी जोवा मळशे। सिम्पली तमे कंई पण एडिट करी शको छो। अने जे मैं इमोजीनी अंदर जे फॉन्ट यूज करी ए फॉन्टनी लिंक पण तमने मारा डिस्क्रिप्शन बॉक्सनी अंदर मळी जशे। तो सिम्पली तमे तमारे जे एडिट करवुं होय तमे एडिट करी देजो। अने इफेक्टोनी अंदर पहेलाथी जे एडिट करेली छे आटलुं ग्राफ सिम्पल बे कहीशुं। बे कह्या पछी फरीथी आपणे थोडुं आगळ आववानुं छे ने तमे 9.16 सेकंडे जे बीट आवे ते बीट पर सिम्पल आई जवानुं छे ने प्लस लाइकमां जई मीडियावाळो ऑप्शनमां जई त्याथी आपणे एक फोटो एड करी दईशुं एनी अंदर। सिम्पली आ रीते फोटो फूल स्क्रीन ना हो तो सिम्पल ऊपर 3 डॉट में जाइए फोटा ने फूल स्क्रीन कर दीधुं। 3 डॉट में जाइए एनी फील कॉम्प्रेशन एरिया एटले आपणो फोटो फूल स्क्रीन थई जशे। बस आ रीते अने एनी लंबाई जे आपणो आगळुं बीट आवे त्यां सुधी लंबाई देवानी छे, अने भाग वधारे होय फोटानो सिम्पली आ ऑप्शन में जईने कट करी दईशुं। तो आ रीते मैं एक फोटो एड कर्यो छे, तो जेथी आपणे जेटला बीट चालू थाय बधा बीटनी अंदर आपणे फोटा एड करवाना छे। तो एनी अंदर फटाफट फोटा एड करी दऊं। बस आ रीते तमारे फोटा एड करी देवाना छे। तमारे जे लास्ट बीट हशे 15.11 सेकंडे ते बीट पर सिम्पल आई जवानुं छे ने तमारे सॉन्ग पर आववानुं छे सिम्पल नीचे, अने सॉन्गनो लंबाई वधारो तो सिम्पल तमारे सॉन्गनी अंदर आई जवानुं छे ने तमने सॉन्गनो वधारानो भाग कट करी दईशुं। आ रीते आटलो ग्राफ सिम्पल बे कहीशुं। अने जे आपणे फोटानी अंदर जे आपणे फोटा एड कर्या एनी अंदर आपणे इफेक्ट एड करवानी छे। तो सिम्पली आपणे आ रीते नीचे आववानुं छे ने तमने एक लेयर जोवा मळशे फोटो इफेक्ट। तो सिम्पली आ लेयरनी आपणे इफेक्ट कॉपी करवानी छे। तो सिम्पल लेयरनी अंदर आई जवानुं छे ने इफेक्टवाळा ऑप्शनमां जई 3 डॉटमां जईने तमारे इफेक्टने कॉपी करी देवानी छे। ने आपणे जे फोटा एड कर्या फोटानी अंदर आववानुं छे ने सिम्पली इफेक्टवाळा ऑप्शनमां जई 3 डॉट पर जई आ रीते इफेक्ट पेस्ट करी दईशुं। तो आ रीते मैं एक फोटामां इफेक्ट पेस्ट करी छे। तो सिम्पली आपणे बधा फोटानी अंदर आ इफेक्ट पेस्ट करवानी छे। तो एनी अंदर फटाफट इफेक्ट पेस्ट करी दऊं। बस आ रीते आटलुं करावी। सिम्पली एमां नीचे आववानुं छे ने तमने लेयर जोवा मळशे। सिम्पली आ बधी लेयरने आपणे खेंचीने आपणे फोटानी उपर लाववानी छे। तो सिम्पली एक एक करीने लई दईए फटाफट एनी उपर। बस आ रीते अने तमने शेडो जोवा मळशे। सिम्पली आ शेडानी उपर आपणे आ ग्रुपने लाववानुं छे एटले आपणी टेक्स्ट इफेक्ट उपर आई जाय। सिम्पल तमारे एनी अंदर एडिट करवी हो टेक्स्ट इफेक्ट तो सिम्पल आ ग्रुपनी अंदर आई जवानुं छे, अने सिम्पल एडिट ग्रुप। तो सिम्पल एनी अंदर तमने बधी टेक्स्ट इफेक्ट एना इमोजी जोवा मळशे। सिम्पल तमे कंई पण एडिट करी शको छो। आटलुं ग्राफ सिम्पल बे कहीशुं। हवे आपणे एनी अंदर एक PNG फोटो एड करवानो छे। सिम्पली आथी आपणे फरीथी 9.16 सेकंडे जे बीट है जे बीट पर आई जवानुं छे ने प्लस लाइकमां जई मीडियावाळा ऑप्शनमां जई अहींयाथी आपणे एक PNG फोटो एड करी दईए एनी अंदर। सिम्पली आ रीते अने एनी साइड थोड़ी आ रीते नानी करी अने नीचे लई सेट करी दईशुं आ रीते। अने एनी लंबाई आपणे विडियो लंबाई सुधी खेंची लेवानी। सिम्पली विडियोनी एंडमां आवीने ते ऑप्शनमां क्लिक करी दईशुं। बस आ रीते अने सिम्पली तमने टेक्स्ट इफेक्ट जोवा मळशे। सिम्पली आपणे टेक्स्ट इफेक्टनी उपर आवती होय PNG तो सिम्पली एनी उपर करी दईशुं थोड़ी। बस आ रीते टेक्स्ट इफेक्टनी थोड़ी उपर राखवानी छे। आटलो ग्राफ सिम्पल बे कहीशुं। अने तमने विडियोनी अंदर मारो टेक्स्ट लोगो जोवा मळशे। तो सिम्पली तमे आ लेयरमां जईने तमे तमारी चेनलनो लोगो लगावी देजो। तो अहीं आपणो आ टाइपनो विडियो बनी रेडी थई गयो छे। तमे एकवार विडियो जोई लो।
તો અહીંયા આપણો આ ટાઈપનો વિડીયો બની રેડી થઈ ગયો છે. સિમ્પલી આપણે એને એક્સપોર્ટવાળા ઓપ્શનમાં જઈને એથી ફૂલ એચડીમાં વિડીયોને એક્સપોર્ટ કરી દેવાનું છે. તો વિડીયો બનાવવામાં તમને કંઈ પણ તકલીફ પડે તો મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી દેજો. તો મળશું આપણે એક નવા એડિટિંગ વિડીયોની અંદર. તબ તક કે લીએ રાધે રાધે, જય દ્વારકાધીશ.